I'm fine. Hello, sir. Hello, sir. Have a seat. Good morning. Morning. So now we have here Mr. Suvas Barot, who is the founder and venture capitalist of Plus13. We have Ankur Patel, who is the founder of BullBell Academy. So, can you share a bit about your background and how you started in the field of investing and trading? Right. Actually, I'm starting in trading in 2016. I hold experience since 15 years in trading. But in COVID time in 2019, I'm in India. So that's time we are thinking every industry is stop. एंड वो टाइम पे हमने वही देखा कि केवल क्या चल रहा है, लोग घर में बिल्कुल लॉकडाउन होकर पड़े हुए हैं, नो इनकम सोर्स एनीवन. सो वो टाइम पे केवल एक ही इंडस्ट्री चल रही थी, ट्रेडिंग इंडस्ट्री. सो दैट टाइम आई एम थिंकिंग अगर ये ट्रेडिंग हर किसी को आएगा तो हर कोई मतलब प्रॉपरली एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है. सो दैट टाइम वी आर स्टार्टिंग आफ्टर कोविड. जैसे ही कोविड का थोड़ा संक्रमण थोड़ा कम हो रहा था, वो टाइम पे हमने बेस्ड ऑन इंडिया बुलबेल एकेडमी स्टार्ट की. देन आफ्टर नाउ वी आर इन यूएई, वी आर केएसटी अप्रूवल. लास्ट 2 ईयर्स हम लोग यूएई में एज ए एकेडमी रन कर रहे हैं और नाउ वी हैव 2000 स्टूडेंट्स जो एजुकेट होके काफ़ी अलग अलग कंट्री में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं. Great. And please help me out with yours. What is your story? Nothing. Initially, I'm basically from a real estate background, and I started a new venture called Plus13 as a venture capitalist and an angel investor, and I started investing into companies. During that format, we were looking at a lot of fintech projects where we could invest and our investors to grow together. So at that point of time, first I came through one of my associated partners who is based out in Australia, and then after that few of my investors were interested to look at another option of gold and forex. And I had been doing my due diligence on a number of individuals that I was looking forward to partner out with. And during that course, I came across BullBell. So basically the idea is that Ankur Bhai has an experience in gold and forex. My other partner has an experience in cryptos. And I'm more towards fintech. So that's the reason that I think my investment strategy slowly, gradually from manufacturing, from EVs, it started getting diverted to more to fintech. So that's how we got in touch. So, how did you guys meet and how did you came across BullBell Academy, Suvasa? Actually, as I said before, I was looking out for a good amount of partners to get associated with gold and forex, right? And in this field, normally there are a lot of fake people in the industry. So you really want to find somebody who has been long, has his existence, has a proper background, right? I've come across a lot of individuals who come and tell me that they're into forex, they're into gold, but they did not have the existence of anything. Just a basic individual or a firm that does not have the licenses, did not have any approvals from the necessary government, and somewhere down the line we've also burnt our hands. So my group of investors, when they came to me, they're like, listen, we need to get into something else. And therefore at that point of time, after finding a lot of or speaking to a lot of individuals, I came across Ankur Bhai at BullBell. So I have been dealing with Ankur Bhai and his team for almost now for about a year or so. And then slowly, gradually, we started to know each other. He was very cooperative because normally forex में कैसा होता है कि if you ask them for licenses, if you ask them for their background, people try to not share that kind of information because they may not have that kind of information. Each licenses that you need to get are very expensive. You need to have the government approvals, which are not that easy to get, right? Ankur Bhai has, I think, got good amount of certificates and licenses that he had. So during that course, when I was looking for somebody, I came across Ankur Bhai, and I met him in Dubai the first time. And I think it's been about almost 6-8 months that now we know each other. So that's how we came across. So, Mr. Ankur, can you tell me how did you started with the BullBell Academy? Yeah. In the time of
कोविड, बट बिफोर कोविड हम लोगों ने सोचा कि भाई जब कोविड का जब टाइम चल रहा था, दैट उससे पहले वी आर स्टार्टिंग इन ट्रेडिंग. तो दैट टाइम मी एंड माई फ्रेंड्स एवरी टाइम वी आर गेटिंग प्रॉफिट एंड गेट लॉस. तो हमें पता नहीं चल रहा था कौन सी कंपनी जेन्यून है, क्या फीड्स आ रहा है, किस तरह से मार्केट रन कर रहा है. वी नो कि भाई कौन सी कंपनी जेन्यून है. देन आफ्टर आई कैन मीट 2 और 3 पर्सन जो सेबी ऑथराइड है, सेबी एग्ज़ाम क्लियर करके बैठे हुए हैं. नाउ उनके पास से हम लोगों ने थोड़ा ट्रेडिंग को लेके एडवांस लेवल के एजुकेशन को क्लियर किया कि हाउ टू दिस इंडस्ट्री एंड हाउ टू रन दिस इंडस्ट्री, कैसे ये इंडस्ट्री काम करेगा, कैसे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं ईजी. देन आफ्टर आई एम थिंकिंग, तो उसी दौरान कोविड की भी सिचुएशन आके खड़ी हो गई कि भाई अभी तो सब जगह पे आप घर पे बैठो और कुछ मत करो. नाउ दैट टाइम आई एम ट्रेडिंग, बट वो टाइम पे माई ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज टोटली चेंज कि भाई एजुकेशन लेने के बाद बंदा कैसे अर्निंग कर सकता है, कैसे अपने पेशेंस और उसको कंट्रोल कर सकता है, वो हमने सीखा. तो खुद एक्सपीरियंस करने के बाद आई एम थिंकिंग, मी एंड माई फ्रेंड्स थिंकिंग कि भाई हम जैसे अगर हम हमारे में चेंज ला सकते हैं तो वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. और काफ़ी लोग अभी उस टाइम पे ट्रेंड चल रहा था, काफ़ी लोग ट्रेडिंग इंडस्ट्री में घुसे थे, लेकिन कोई ना कोई रीज़न से कोई कंपनी चीट करके चली जाती थी, जो प्रॉफिट करते थे उनको पैसे नहीं मिल रहा था. तो वी आर नॉट फाइंडिंग हु इज़ अ ऑथोराइज पर्सन के जिसके पास हम लोग ट्रेडिंग कर सके. रीज़न ये था कि भाई दैट टाइम इन इंडिया काफ़ी फेक कंपनीज रनिंग कि भाई एग्जाम्पल बोलूँ तो काफ़ी नाम तो नहीं दे सकता कंपनियों का, लेकिन वो कंपनी रन कर रही थी, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा था उस टाइम पे और वो कहीं ना कहीं लूज़ करके आ रहे थे. तो दैट टाइम आई एम थिंकिंग अगर कोई बंदा ये एजुकेशन को एक लेवल पे अच्छी तरह से एजुकेशन लेगा तो वो ट्रेडिंग स्किल को अपनी चेंज कर सकता है और अपनी इनकम बढ़ा सकता है. और वो कोविड के टाइम में हमने किया. 3 साल हमने, जब कोविड रहा, घर पे बैठ के 1.5 से 2 साल हम लोगों ने जब ट्रेडिंग का अच्छी तरह से एक्सपीरियंस लिया और काम किया तो काफ़ी अच्छा अर्निंग किया. मतलब हमारे घर का खर्चा इवन हमारे EMI वगैरह भी हम लोग ट्रेडिंग से निकालना स्टार्ट किया. नाउ आई एम थिंकिंग कि भाई अब मेरे को इसमें कुछ करना है. दैट टाइम आई एम 2019 आई एम रजिस्टर्ड बुलबेल एकेडमी इन इंडिया. और वो टाइम पे हमने एजुकेशन स्टार्ट किया कि भाई हाउ टू ट्रेड करेंसी ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड इन गोल्ड मेटल्स. तो एवरीथिंग इज, तो वो टाइम में मेरे को काफ़ी अच्छा ग्रुप से कनेक्टिविटी हुई, काफ़ी अच्छे लोग मिले, काफ़ी लोगों को एजुकेशन दिया. नाउ इन 2019 एंड टिल 2022 माई एकेडमी हैज़ एजुकेटेड 2000 स्टूडेंट्स, जिसके अवार्ड में मतलब भारत गुजरात रत्न समथिंग अलग अलग अवार्ड अलग अलग चैनल न्यूज़ मीडिया से भी हमको मिले हुए, TV9 से भी मिले हुए हैं, कॉफ़ी टेबल में भी कंपनी बुलबेल एकेडमी को अवार्ड मिला हुआ है. तो वो स्टूडेंट अभी जो कनाडा में बसे हुए हैं, अमेरिका USA में बसे हुए हैं, फिर काफ़ी लोग UK में बसे हुए हैं, वो लोग ऑथोराइड प्लेटफॉर्म पे जाके ऑथोराइड ट्रेडिंग करके अभी काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं. लाइक हमारा वो थिंकिंग था कि जो बंदे यहाँ से अब्रॉड जा रहे हैं वहाँ पे जाके यही होता है, बड़ी लोन उनके फादर पेरेंट्स बड़ी लोन लेते हैं. बड़ी लोन लेने के बाद वो लोग वहाँ पे यहाँ से जाते हैं, EMI का टेंशन, वहाँ पे अर्निंग का टेंशन, एजुकेशन का टेंशन. तो एक छोटी सी एज में बच्चे को यह है कि बर्डन बढ़ जाता है. तो अगर स्किल है, स्किल इंडिया हम बात करें कि भाई अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब का जो विज़न है, एक तो आत्मनिर्भर भारत एंड स्किल इंडिया, उसको लेके उनके थॉट्स बहुत क्लियर हैं. तो मेरा ये पर्सनली थिंकिंग है, अगर हम लोग खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा. अगर हम हमारी खुद की स्किल नहीं डेवलप करेंगे तब तक हम लोग भारत की स्किल भी डेवलप नहीं कर पाएंगे. तो इन कोविड टाइम आई एम सेल्फली डेवलप माई स्किल और इंडिपेंडेंस भी मैं खुद हुआ. उसके बाद हमने सोचा कि अभी हर किसी को यही चीज़ करनी चाहिए. क्यों मेरे देश का बच्चा बाहर जाके मजदूरी करके सलाम करके डॉलर कमाए. अगर उसके पास स्किल है, स्मार्टनेस है, तो वो स्किल को यूज़ करके वो अच्छी तरह से डॉलर अर्निंग कर सकता है. तो वी आर एजुकेट कि अगर आप USA जा रहे हो तो वहाँ पे कौन सा ऑथोराइज प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाके काम करो, वहाँ जाके कैसे अर्निंग कर सकते हो. मतलब दिन का $100, $200, $500 आपकी स्किल के हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हो. तो वो चीज़ हमने एजुकेट की और बुलबेल एकेडमी को हमने रन किया. So, Mr. Ankur, do you mind sharing me the meaning and differences about the courses which you have in the BullBell Academy? Yeah, my all courses is KHD approval. Then we have experts team, जो एक्सपर्ट्स लोग हैं जो अच्छा एक्सपीरियंस लेके मार्केट से बैठे हुए हैं. इट्स वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग एंड जो भी ट्रेडिंग दे रहा है वो ऑथोराइड बंदा है. सो बेसिकली अदर इंस्टीट्यूट एंड माई इंस्टीट्यूट
आज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट मार्केट में रन कर रहे हैं जो अनऑथोराइज मतलब तरीके से, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो रन कर रहे हैं, लेकिन वी हैव ए वेरी गुड स्किल और गुड एक्सपीरियंस. 15 to 17 years I have self experience and my team also 10 to 12 years experience. तो आज ट्रेडिंग साइकोलॉजी को देखने जाए तो ट्रेडिंग मार्केट मूवमेंट से लेके सब कुछ, लाइक वी हैव स्पेशलिटी इन मेटल्स, करेंसीज, क्रिप्टोज. तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स जो बंदे अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं. एंड वी हैव ऑनलाइन ऑप्शंस ऑल्सो. सो अगर कोई बंदा यहाँ से यूएई से अगर थाईलैंड या फिर मिडल ईस्ट कहीं पे भी स्टडी करना चाहता है, वी आर एजुकेट. सो वी हैव ऑप्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो जो मतलब जूम के थ्रू हम लोग ऑनलाइन क्लासेस, वेबिनार्स वगैरह भी प्रोवाइड करें. वी हैव प्रोवाइडिंग फ्री वेबिनार्स इन अ वीक. इन अ वीक वी आर प्रोवाइडिंग 3 or 4 times वेबिनार्स. मतलब मार्केट न्यूज़ के टाइम पे हमारा स्पेशल ट्रेनिंग आता है, 1 घंटे का पूरा वेबिनार लेता है और लोगों को एजुकेट करता है जो लोग हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं. वी आर प्रोवाइडिंग इन फ्री ऑल्सो. सो that's why we are different in market. How does BullBell Academy differentiate itself from other trading and investing educational platforms? BullBell Academy based on India और देखने जाए तो now we are in UAE KST approval. और जो भी हमारे यहाँ पे एजुकेशन ले रहा है तो BullBell Academy ऑल कोर्सेज इज KHD अप्रूवल. और साथ में जितने भी स्टूडेंट्स है वी आर प्रोवाइडिंग फंड ऑल्सो एंड फ्रेंचाइजी. वी हैव फ्रेंचाइजी मॉडल ऑल्सो. एंड आवर विजन इज के भाई हम लोग सोच रहे हैं कि भाई अभी तो यूएई में है लेकिन वी आर स्टार्टिंग USA, UK, कनाडा. सो डिफरेंसेस इज कि भाई जो बंदा हमारे साथ जुड़ रहा है वो एक ऑथोराइज एजुकेशन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से बाहर निकलेगा. मतलब वी आर ऑथोराइज ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट. So, Mr. Suvas, beyond trading, what other platforms or what other education is BullBell Academy going to give in US area? See, when I came across BullBell, I found that, normally when you meet anybody from this industry, most of the people are too hyped up about themselves. Whereas in this industry, you need people who are very calm, patient, who knows about when to enter and exit. Because the basic foundation of any ownership becomes the foundation of any business, right? So in the US, when we talk about the financing sector, as you know that today, as Indians, we are very, as Ankur Bhai rightly said, that today Indians are placed in many different levels of positions in the US. And the next generation that's coming up, again, the young generation that's coming up needs to be given a vision, right? So I evaluate businesses throughout my day. And I like people being self-dependent, right? I need them to be independent. Thought process needs to be developed. And most importantly, in today's generation, patience is what lacks. There's a lot of aggressiveness. You won't find much of youngsters today being very calm and patient. They want something which is quick, right? Now, when I got into the finance sector, the way that I see people making money, and it's quick money, right? Chances are that if you take it in a positive way, you can learn a good amount of patience, calmness, which can help you in the future, right? Now, when you talk about basically finance industry, finance is a vast industry. It's a vast industry. It would cover banking. It would cover financing of properties. It would cover, cryptos, gold, forex. And whatever you learn from an academy, it is only useful to you under the scenario if you can keep yourself patient and calm. And I think that is where Ankur Bhai is going to bring in his expertise. सिखाना बहुत ईजी है, बट टू मेक देम रियलाइज दैट विद द लर्निंग्स यू नीड टू कीप कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. आई थिंक दैट इज वेयर ही इज गुड एट, एंड दैट इज वेयर ही हेल्प्स दोज इंडिविजुअल्स वेयर they need to learn from their mistakes. So there has been incidents where I and Ankur Bhai keep discussing. There has been few individuals or kids
who have done trades and they've messed it up. But rather than getting annoyed, Ankur Bhai is rather saying, let's help him out to correct the trade. If it's an investor who has got into a problem, he'll still help them out to correct the trade. So when I look at from a US perspective, I have not been there for long, but my vision as far as BullBell is concerned, as far as in US, is that the community that today stands in India, which is already there and which wants to transit from here to there, they need to be given a new vision for this, And if we can even cater to some of them, so like Ankur Bhai said, he's doing Skill India, Atmanirbhar in India, I want to continue the same thing over there, right? And it could be for the Indian community, that because I'm an Indian, but that doesn't stop me to train anyone over there. So his expertise and my expertise are very different. He is a person who can train people, give them guidance. I'm a person who practically can tell them to keep the patience, show them the long-term profits, right? And together is what BullBell is trying to bring in to the US. Finance is a very big subject, but we are focusing on what we are good at. And if they learn the similar education, they can use it for any other asset. It cannot be that they need to use it only for Forex. They can use it in any other asset, silver, aluminium, in whatever you can do a candlestick, whatever you can do analysis and buy, they can do it in anything. So I think what we are planning to do in the US is there are two segments. One is Ankur Bhai and Plus13 team will first educate them. Once we educate them, they will have to give a test of ours. Yeah. Right? If they pass our test, then they'll be eligible from our side, not the government, but from our side, where Ankur Bhai and we will be giving them a fund, and they will have to prove that they are able to give us good returns. Now consider a situation where a person is able to give a return and a person is not able to give a return. So if he's able to give a return, then we train him for the SEC training, where again, then he's independent to do what he wants to. He doesn't have to stay with us. Under a scenario where he's not passing the test, he will again have to go through the course. Okay? Again, he will have to go through the whole process. Okay. Again, we will provide him the fund. Okay. And then I think we'll give him 3 chances. And after the 3rd chance, we'll have to let him know that he's not good at it. So we will be keeping our options open, and we'll make sure that as much as possible, if we can, really train individuals to the skill where they can become self-dependent and independent, is what the end goal is going to be for BullBell US. What is the mission behind this recent partnership between Plus13 and BullBell Academy? I think, as far as Plus13 is concerned, as I said, we have a group of investors, right? And normally I like to work with group of investors who have the ability to risk compared to reward, and also have the appetite at times to understand the losses. But, it's a worldwide phenomena that people or individuals love profits, they don't love losses. So it is very difficult from my end to select a partner who is committed to what he's doing, right? And when I met Ankur Bhai and his team, I felt that there was a lot of commitment to what they do. And Ankur Bhai had his good presence in Dubai, also in India through his academy. And the idea was to start something in US. Now, US is a very different territory for both of us. But it is also one of the financial hubs of the world, right? There are a lot of individuals there who, I would say, do not have the idea right now of how you can invest into asset classes like crypto, Forex, gold, and get good returns out of it. Because as Ankur Bhai really said, that in this particular industry, there has been numerous frauds, scams that have taken place, which has actually created a lot of fear in individuals. So when I was I was in the US for about a year, from 22 to 23. And
I kept observing a lot of industries, a lot of stuff over there, spoke to a lot of individuals, and I could get this feeling that they want to invest, but they're not getting the right person to invest. They're not able to do the right diligence, right? So as Plus13, my task is that I try to do my best due diligence about a person, about his company, and make sure that anything that I'm tying up with, he is in with me like I am in with him in profits or losses. So at that point of time, I think I came in touch with Ankur where I discussed this idea with him. I said ऐसा करना है यूएस में, और यूएस में जब करना होता है तो डर भी लगता है. बहुत फ्रैंकली आपको बताऊं कि थोड़ा डर भी लगता है, बिकॉज यू आर न्यू टू द कंट्री, यू हैव टू बिल्ड योर ओन गुडविल एंड क्रेडिबिलिटी, एंड वी बोथ विल बी न्यू टू द country. Maybe I know the country because I've been traveling, but as far as business perspective is concerned, I am still away from it, right? So I went to him and I told him, Ankur bhai, how can we do it in the US? So he said, we'll have to speak to a CPA. That's one of my CPAs. And get an idea about it. How do we streamline it? How do we get the licenses? What are the steps that we need to take? But the easy thing that happened with me with this partnership was that he is too simple to work with. He's too simple. Very simple. He's like me. He's more solution oriented rather than a problem oriented. कि अगर ऐसा करना है तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि कैसे करना है, कब करना है, क्या ड्रामा डालना है. For him and me, it's never been that. For both of us, I think it's never been about that. It's been कि ये करना है. Yes. So I think that is where we came in. Yeah. Nice. Yes. So that's how the partnership took place, actually. And as well as BullBell Academy, my vision is broad. Academy, we are starting around the world, first of all. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोचा था कि फ्रेंचाइजी मॉडल में रन करेंगे, बट नाउ देन वी आर स्टार्टिंग स्लोली. जैसे मैंने बताया कि भाई इंडिया से स्टार्ट किया, विज़न बड़ा था कि कुछ करना है यार, लोगों को इंडिपेंडेंस बनाना है और स्किल भी डेवलप करनी है. क्योंकि आज बीइंग ए इंडियन, मैं सोचूंगा मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतनी एज में भी पूरे वर्ल्ड को अभी फाइट दे रहा है, तो वी आर ए इंडियन और हम तो उनके बच्चे हैं. और अगर बाप इतना स्ट्रांगली काम कर रहा है तो बेटे क्यों नहीं. तो उनका विज़न देख के हमने सोचा यार हमको भी बढ़ना चाहिए, हमको भी कुछ करना चाहिए. अगर कोविड में अगर देश को, इतने बड़े देश को, आज देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाइज देखने जाए, पॉपुलेशन वाइज देखने जाए तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की है. वैसी पॉपुलेशन में भी इंडिया को कंट्रोल करके रखना, और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा देश आज रन कर रहे, हर जगह पे विन विन पोजीशन पे हम लोग आ रहे हैं, तो वो देखते हुए हमारा कुछ ना कुछ, हम खुद मोटिवेट हो रहे हैं यार, हमको कुछ करना चाहिए. अगर बैठे रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी. तो वो सोचते सोचते हम तक यूएई तक पहुंच गए कि भाई कोविड में स्टार्ट किया इंडिया में और वहाँ से अभी जंप लगा के सीधे यूएई. सो नाउ दैट टाइम मतलब इन यूएई आई एम सिटिंग देयर भाई कि अभी एकेडमी स्टार्ट की है, इट्स केएचडी अप्रूवल, तो हम लोग इससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं. सो नाउ माई विज़न इज़ कि भाई अगर मैं मेरे बच्चे यहाँ पे एजुकेट करके मैं यूएसए भेज सकता हूँ, कनाडा भेज सकता हूँ, यूके भेज सकता हूँ, या फिर अदर कंट्री में भी भेज सकता हूँ, मिडिल ईस्ट भेज सकता हूँ, या फिर डाउन भेज सकता हूँ, तो क्यों ना हम लोग खुद वहाँ पे पहुँचे. नाउ बिफोर 1 year आई मेट सुहास सर, तो फिर उनके साथ मिलने के बाद ये हुआ कि भाई अगर कोई स्ट्रॉन्ग बंदा मिल रहा है जो एक तो कमिटेड है, दूसरा ये है कि उसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है, तीसरी एक चीज़ है कि भाई स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है. अगर आप कहीं कोई अदर कंट्री में, जैसे सुहास भाई ने बताया कि भाई आप यूएस में स्टार्ट करना, इट्स वेरी बिग चैलेंज. नाउ ये हो सकता है अगर इफ़ वी आर सक्सेस इन यूएसए में प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, तो आफ्टर इन 3 years वी आर स्टार्टिंग इन फ्रेंचाइजी मॉडल, और हम लोग इन 3 सालों में 10 फ्रेंचाइजी स्टार्ट करेंगे यूएस में. अगर हम लोग वी आर सक्सेस दैट टाइम, तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई यूएस को छोड़ के हम कनाडा भी स्टार्ट कर सकते हैं, कनाडा को साथ साथ यूके भी स्टार्ट करेंगे, तो वी आर स्टार्टिंग एवरीवेयर. तो यही है कि भाई सुहास भाई के साथ जुड़ के हम लोग, मेरा विज़न थोड़ा ब्रॉड हो गया, और कहते हैं ना जहाँ एक से भले दो. तो मेरे को ये है कि भाई आज सुहास भाई से जो 13 फर्स्ट के साथ जुड़ के आज मैं विज़न काफ़ी बड़ा देख रहा हूँ और बड़ा सोच रहा हूँ कि हम लोग काफ़ी अच्छे जगह पे पहुँचेंगे. दैट्स व्हाई एक्चुअली इफ यू गो टू यूएस, अगर आप वहाँ पे देखेंगे, सो आर कल्चर इज़ वेरी डिफरेंट. वी आर मोर ब्रिटिश colonized, राइट? यूएस इज़ नॉट दैट वे, बट I think individuals there are looking for some new kind of business opportunity.
रियली स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है वहाँ पे. So I consider my father's generation to be the first generation, and then our second, and now the third generation. So we are the intermediates, right? If you look at it. So वहाँ पे एक opportunity मुझे दिखती है कि there are good amount of individuals who are looking for a good business model, and this becomes a good business model, right? Of course. And creating, so मैं हमेशा बोलता हूँ कि business में नहीं पैसा बनता, पैसा बनता है networking से. Very correct. Right? So if you have the right networking, the right people, the right intentions, right? And I believe that मैं किसी भी के साथ काम करता हूँ, I look only for 3 things. I have defined it as IEC. ठीक है? और वो मेरे लिए है इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड कैरेक्टर. बंदे के पास पैसा कितना भी हो, अगर ये 3 चीज़ नहीं है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एज फार एज बुलबेल एकेडमी यूएस इज कंसर्न, तो मुझे पता है कि इस बंदे के पास पैसा है पर ये चीज़ नहीं है, मैं उसके साथ पार्टनर नहीं करूँगा, बिकॉज वी लूज आवर ब्रांड नेम, राइट? Plus13 विल लूज हिज ब्रांड नेम, बुलबेल विल लूज हिज नेम. तो कहने का मतलब ये कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है, वर्ल्ड वाइड है. एंड आई थिंक बिकॉज ही इज़ दैट पैशनेट अबाउट इट. सी, आई एम अ वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट? आई हैव इन्वेस्टर्स. I look for people who are passionate about what they do, and he's really passionate about it. So that helps me to take it further, right? My other partner is also well passionate about it. So that gives me the confidence that at least the money is not in a wrong place. It gives you a kick, which means कि now I can have it. हाँ. And बहुत, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो जाते हैं जिनका बैकग्राउंड होता है अच्छा. So I believe there are 2 scenarios. One is where you have nothing and you're going to US. And one is where you have everything and you're going to US. There are 2 scenarios. People who have, let's say, are going because they don't get that quality life over here and they're going there. But there are people who have quality life over here but they're going for expansion over there. ये भी अभी लोग नहीं समझ पा रहे वहाँ पे. अभी भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा है कि जो भी बंदे इंडिया से आ रहे हैं उनको यहाँ पे आके सिर्फ सेटल होना है, राइट? वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इंडिया टुडे हैज़ द एबिलिटी एंड द कैपेबिलिटी कि वो यहाँ बैठे बैठे भी यूएस में धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. एंड दैट इज द माइंडसेट दैट वी बोथ हैव टू ओपन ओवर देयर, राइट? एंड आई थिंक दैट इज वेयर हिज रोल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट केस फॉर मी, राइट? सो दैट्स वेयर Plus13 एंड BullBell हैव कम टुगेदर. So, Mr. Suvas, what are your future plans for BullBell Academy in USA, and what are the financial aspects which students should know about it? So I'll keep 2 things separate. Ankur bhai will, I think, give more idea about how the franchisee would work. But my idea for US BullBell is to first create a community and a network of like-minded individuals who can understand the concept of BullBell Academy. Right. And we together are looking at least having good amount of franchisee models currently in those states or cities where we have a Indian student community more. Kids who are transiting for education from India to US, right? So those are the states that we'll be looking for, or cities for like-minded partners for Plus13 and BullBell, right? Ankur bhai, tame you can just give an idea about केवा लोगों ने. बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग फ्रेंचाइजी, बट उसके अंदर भी कुछ हमारे क्राइटेरिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ गिविंग द फ्रेंचाइजी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज़ वेल एजुकेटेड, मतलब उसको एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए. इफ़ ही इज़ विथ फाइनेंस इंडस्ट्री, तो वेल एंड गुड है. देन आफ्टर फ्रेंचाइजी, उसको जो हमारा एडवांस लेवल का जो कोर्स है उसको खुद एजुकेट होना पड़ेगा. देन आफ्टर वी विल गिव यू फ्रेंचाइजी, बिकॉज कि आज के दिन में जो बंदा उसको रन करने वाला, या खुद वो करे या फिर
जो फ्रेंचाइजी रन करने वाला है वो बंदे को एडवांस लेवल का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आफ्टर वी विल गिव यू फ्रेंचाइजी। और उसके भी क्राइटेरिया है, ही इज़ अ गुड प्रोफाइल एंड साथ में हम लोग ये भी देखेंगे भाई उसका जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए, देन आफ्टर वी विल गिव यू फ्रेंचाइजी। So does he need to give in the exam as well for the post? Yes. Yes. Okay. Understood. And as far as for the kids is concerned, I think the kind of discussion that we had is once we make the us.bullbellacademy.com, any student or any kid, he can come and register himself on the website. Yeah. And we'll be listing out the states, the cities of the US. Okay. And consider a situation where if the person doesn't have, if we do not have a BullBell Academy franchisee over there, then for that temporary basis, we can provide him through online courses, online training and stuff. But students would be able to come down to us.bullbellacademy.com and register themselves. And then our team will filter it out and pass on the information to the person or the franchisee who is in that particular city or the nearest one to them. Right? As far as the franchisee model is concerned, I think we are still working on it, on how we want the franchisee to make the money on it and how do we want to partner out with them. So that is still in the process, and I think that we should have mostly ready by a month or so. इफ़ ये भी हो सकता है हमारे यहाँ पे जो बंदा एजुकेशन लेने के बाद खुद अपनी फ्रेंचाइजी डेवलप करना चाहता है, वी विल गिव यू, बट ये है कि भाई उसको खुद एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए फाइनेंस इंडस्ट्री का, तो वी विल गिव यू फ्रेंचाइजी. So Mr. Suvas, Mr. Uncle, congratulations, you have been recently partnered.